chemistry. So in today's class we are going to discuss two main types of reactions. First, the types of reaction based on heat energy. Heat energy का exchange होता है. The exchange of heat energy takes place during chemical reactions. Based on exchange of heat energy, we have two types of chemical reaction: endothermic and exothermic. Endo it means gaining. Endo मतलब gaining का मतलब है coming inside. Endo का मतलब एक और भी मतलब होता है coming inside. When heat energy come inside, किसके come inside? There is a two terms. One term is called as system. Okay. Another term is called as surrounding. So we have two terms, system and surrounding. That system, what does it means? The workplace which is under observation. Suppose करो, the reaction is taking place into the test tube. एक टेस्ट ट्यूब के अंदर हम लोग केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं और इस केमिकल रिएक्शन के अंदर दिस टू सब्सटेंस आर रिएक्टिंग, A and B substance are reacting with each other. Okay, if this A substance and B substance are reacting inside this test tube, it means this test tube is under observation and this test tube is your system. Okay, the atmosphere around this test tube is called as surrounding. Yes, so you understood two terms. One term is called as surrounding, another one is called as system. Surrounding is the atmosphere of the system, and the system where the actual chemical reaction and actual process is going on. Say for example, I am shooting this video with the help of cameraman. It means what? That this is the system between me and cameraman, and it is system between you and me. The whole atmosphere is called as surrounding. Okay, so test tube is your system, and the atmosphere around it is the surrounding. So what will happen if the heat energy is loosed by the system? If the heat energy is released by the system into surrounding, that type of process is called as exothermic. In a chemical reaction, if heat energy is loosed by the system into surrounding, is called as exothermic. Similarly, if heat energy is gained by the system, surrounding से अंदर आ रही है, system के अंदर energy आ रही है, this type of process is called as endothermic. ठीक है, इसका थोड़ा लाइव एग्जांपल याद करते हैं. When cement reacts with the water, तो रिएक्शन ऑफ सीमेंट एंड वाटर इज अ हाईली एक्सोथर्मिक. ठीक है, इसलिए हम लोग सीमेंट और वाटर को जब हम लोग एक बार पुताई कर देते हैं, पूरे सीमेंटिंग कर देते हैं, उसके बाद हम लोग उसको कंटिन्यूअसली पानी चढ़ाते रहते हैं. एक कोई भी बिल्डिंग बन रही है तो आप ध्यान देना कि जहां जहां सीमेंट नहीं रहता वहां पर पानी डालते रहते हैं दिन रात. वाई? बिकॉज जो सीमेंट और वाटर की रिएक्शन से और सीमेंट की सीमेंटिंग होने से तक के जब दोनों के बीच में रिएक्शन हो रही है तो हीट एनर्जी रिलीज हो रही है, मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है, उससे क्रैक्स बन सकते हैं. तो इस हीट एनर्जी को कम करने के लिए वी अप्लाई वाटर विच नॉर्मलाइज द टेम्परेचर. ओके, सिमिलरली रिएक्शन ऑफ लाइम विथ वाटर, क्विक लाइम, वी नो द क्विक लाइम जो हम लोग घर के दीवारों पे पुताई करते हैं. तो क्विक लाइम दिस रिएक्ट्स विद द वाटर. व्हेन क्विक लाइम reacts with the water, it is also the one type of exothermic reaction. It is also one type of exothermic reaction. So what happens when quick lime reacts with the water? It forms CaOH twice, calcium hydroxide. It forms calcium hydroxide, CaOH twice, and releases some amount of heat energy. तो जिस वेसल में क्विक लाइम और वाटर को रिएक्ट करवाते हैं उसकी हीट एनर्जी बढ़ जाती है, क्योंकि हीट एनर्जी बाहर निकलती है. ठीक है, इसलिए क्विक लाइम को वाटर के साथ जब रिएक्ट करवाते हैं तो भिगा के रखते हैं, 6-7 घंटे 8 घंटे के लिए भिगा के रखते हैं, जिससे क्या हो कि पूरी हीट एनर्जी बाहर रिलीज हो जाए. यस, तो दिस CaOH twice is called as slacked lime. So always remember the reaction of quick lime with the water forms slacked lime,
and releases some amount of heat energy. It is example of one type of exothermic reaction. Yes. एक और रिएक्शन है जो एक्सोथर्मिक होता है, CNG गैस. CNG gas is made up of methane. तो आप what happen when you combust the methane, मतलब आप उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करो, तो what happen, it forms carbon dioxide, it forms water and releases some amount of heat energy. Wherever I write this delta, it means heat energy, you know? So the combustion of methane or combustion of anything, combustion of carbon, hydrogen is always exothermic. तो मीथेन को ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करवाया, इट फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड रिलीजेस हीट एनर्जी. तो इस हीट एनर्जी को हम लोग मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर जाते हैं और मोटर व्हीकल को चला देते हैं. ओके, होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड. देन वी कैन से दैट रिएक्शन ऑफ लाइम विथ वाटर इज एक्सोथर्मिक, कंबस्टन प्रोसेस इज कंबस्टन ऑफ द मीथेन इज एक्सोथर्मिक. आपके घर पे जो एलपीजी गैस है, जो ब्यूटेन गैस से बना हुआ है, उसका बर्न, उसको भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न कर दो. इट इज वन टाइप ऑफ कंबस्टन रिएक्शन. इट इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ एक्सोथर्मिक प्रोसेस. आपकी बॉडी में एक प्रोसेस हो रही है, आपकी बॉडी में एक प्रोसेस हो रही है जिसको हम लोग बोलते हैं रेस्पिरेशन. व्हाट हैपेंस, द C6H12O6 या ग्लूकोज, आपने खाना खाया, उसमें शुगर था, उस शुगर डाइजेस्ट हो गया ग्लूकोज के अंदर. तो व्हाट हैपेन, आपने ऑक्सीजन इनहेल कर लिया. This oxygen start reacting with this glucose. So what will happen? It will form carbon dioxide, it will form water, it will form some amount of energy in our body which is stored in form of ATP. Again, it is one type of exothermic reaction. आपको एग्जाम में पूछेंगे, how will you explain that respiration process is a one type of exothermic process? So you will say that during respiration, when oxygen reacts with the oxygen, glucose, it forms carbon dioxide, water, and releases some amount of heat energy, some amount of energy, which is stored in form of adenosine triphosphate, ATP. So, all of you getting the examples of the exothermic reaction. Similarly, endothermic reaction, all thermal decomposition reaction. All type of decomposition reaction, like decomposition of calcium carbonate, decomposition of lead nitrate, decomposition of ferrous sulfate, all these reactions are done by the gaining of heat energy. It means this all reactions are endothermic. Like nowadays coronavirus is going on. In a coronavirus, you are using sanitizer. You are putting your sanitizer on hand और हाथ में बहुत ठंडा ठंडा लगता है. Why? Because that sanitizer gains heat energy from your hands. Again, it is one type of endothermic process. Petrol, if petrol is kept alone, ऐसे पेट्रोल को ऐसे खुली सरफेस में रख दो, it start evaporating. So again, it gains the heat energy in get evaporation. So each and every evaporation is also one type of endothermic process. So hope all of you understood the two types of chemical reaction based on heat energy. It is endothermic and exothermic. हीट एनर्जी रिलीज हो रही है, सिस्टम गर्म हो रहा है, इसका मतलब एक्सोथर्मिक. हीट एनर्जी गेन हो रही है, सिस्टम ठंडा हो रहा है, इट मीन्स इट इज एंडोथर्मिक. ओके, थैंक यू. ओके.